D.K. Singh sir has already joined us, and GGSESTC heartily welcome our chief guest, Professor Dr. D.K. Singh, Director BIT Sindri, to the valedictory function of 1 week FDP program on NAAC Revised ANA Framework 2022. Our chief guest, Professor Dr. D.K. Singh, an eminent scientist, Director of BIT Sindri, Professor of EC and IT, the sole government engineering college of JUT Ranchi, which is in Sindri, Dhanbad. Sir, we welcome you. Morning. Good morning to one and all. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Welcome, sir. Yes, sir, you are audible. Audible. We are waiting for your blessing, sir. Yes, sir, you are audible, sir. Yeah. Very good morning. Should I start, Principal Sahab? Yes, madam. Yes, sir. Please, sir. I don't initially. Yes, sir. And I also welcome our patron, Shri Surendra Singh, sir, Hon'ble Secretary. Yes, sir. Welcome, sir. Yes, sir. सर को अलाउ कर दिया. Sir, please, sir. Thank you very much. आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा आदर, अभिनंदन एवं नमस्कार. Very good morning. सत श्री अकाल, आदाब. At the outset, I would like to thank Principal Sahab for giving me this moment to share my view with all the honorable faculty members, officials, and staff. In the inaugural, I was not present, so I took the permission from the Principal Sahab that I must be allowed to be part of this valedictory function. This workshop you have arranged NAAC. The focus is on the NAAC. You know, the education is the pillar of any country for the development. If you want a country to be developed, a developed country, right? So education is one of the component, one of the pillar of development. And how do you get a quality education? So UGC has set up a body that is called a NAAC body, a autonomous body to assess the quality and accreditation of any institution, right? So the purpose of this workshop was to make you aware, because every institution has to go through NAAC. Just 1 minute, I will take time. Yeah. So the purpose of any educational institution is the quality education. You know, the education, the real definition of education is same. Tamso ma jyotirgamaya, asato ma sadgamaya, mrityo ma amritgamaya. Oh God, take me from darkness to enlightenment. Just to enlighten the society is the purpose of education. But our institution and your institution is a technical institution. So what is the purpose of the technical education? So any technical higher education is called the pillar of economy. It is the contributor in the economy. The technical education impart your strengthen the economy of the country. You see the success story of any developed country. You see the success story of the China. Where the China is going? China is succeeding because of their technical education, because of the quality of the education. You might have gone through the vision of the NAAC. The vision of the NAAC is the defining parameter of technical education or any higher education is quality. So quality is called the defining parameter of a higher education. So how do you ensure that you are providing a quality education?
So there must be a internal bodies and the external body to regularly evaluate and monitor the assessment, the benchmarks, the standard practices you are adopting to maintain the quality of the education. So UGC set up in 1994, the NAAC, National Accreditation and Assessment Council, right, to assess the quality of higher education, whether the institution is adopting a certain standard of practices that is defined for the quality education or not. That is the purpose of NAAC. So the 7 criteria, I just joined, I think 30 minutes before. So there was a talk going on the seventh criteria. Now, gentlemen, my view is that any director, principal, secretary or chairman, they must have in their hands all the criteria of the NAAC and the NBA. And on the basis of the NBA and the NAAC, they must develop their infrastructure. They must develop their teaching learning process, because the curriculum is not in your hand. It is in the hand of universities, right? But you must give your feedback to the university so that the university will change their curriculum as per the NAAC requirement and as per the industry requirement. Because how do you measure? How do you measure the quality? The quality of any institution is measured by your student. How much the jobs you have provided, how much jobs you have created. The student progression. Where are your students? You have to trace your student, right? How much research, right? How much knowledge you have generated? How much innovation that is taking place in your institution? These are the parameters through which the quality is being, right? So fortunately, your organization, your group is a very powerful group, or is a popular group of trust, which are famous for providing a good education at the school levels. But the institution has to come to provide a quality education at the higher level. And I am thankful the present principal is taking so much initiative. I am going through regularly. They are conducting so much workshop, making you aware. So I must give my pointers before you, because you know how do you measure, how do you rate any university? You know, a institution, a university is now called a knowledge house, a knowledge house, a knowledge powerhouse. And how can you make a good institution? How can make you an institution that is popular among the country, a highly ranked institution? You should provide a good institution where knowledge is being created, where social injustice is being eliminated, where the institution can aspire their dream, fulfill their, where the student can come in your campus, they can dream to be one of the best in the country, right? So for that purpose, the institution has to adopt the NAAC criteria and the NBA criteria to fulfill those requirements and to make the institution a great institution. And for that, already I have gone through that. There are 7 criteria. The one is the curriculum aspect. So all the colleges of the Jharkhand Technical University, they must go through the curriculum regularly, and they must communicate, they must give their feedback to the university for the change in the curriculum. Because curriculum is one of the areas where the university and the institution must be careful about. Just I am talking about one of the example. You just visit IIT Dhanbad. There are many courses, and those courses were popular 30 years back. Courses on mining engineering, right? So they have started dual degree courses, but they allowed the student
that all those BTech student of the first year who is having more than 8 CGPA have a freedom to change their branches. And there were only 60 seats allocated for computer science, but you will be surprised, out of 700, 400 students adopted computer science. Why? Because the students are now more aware than the faculty members. What the management are doing that we have to preserve those branches, right? Because already faculty are there. So their compulsion is that there must be some of the students studying there. But the job providers are the computer science. But how can you make the aspiration of the student fulfilled? How can you plan your student so that they can get the jobs easily? So we are going through the new education policy, and through the new education policy, we have the option of open electives. So in the open electives, the student must have a freedom to choose any of the subject. So out of 160, at least 60 credit, a student must have a freedom to choose the courses of their choice. You see the example of Facebook founder Mark Zuckerberg. The Mark Zuckerberg, you know, can any of the participant can share what were the major papers of the Mark Zuckerberg? Any faculty member? Any faculty members? Any faculty member? Am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Mark Zuckerberg has computer science and psychology. You see how the best university runs. So where the Mark Zuckerberg was studying, there was a provision of choosing psychology as also the one of the major paper. And Mark Zuckerberg chose psychology as one of the paper because he wanted what is the impact of his innovation. But you see our country educational infrastructure, you won't be finding in one of the best institutions that psychology and philosophy are being taught. So this is the right time. This is the right time under the new education policy. You make the curriculum. If you don't have a freedom, you just send your feedback to the university, concerned university, that under the new education policy, a student have a freedom, because the new education policy is student centric, right? So a student must have a freedom to choose their papers of their choices. Out of 160 or 70 papers, at least 1/3 paper, a student have a freedom to choose. The university must give their freedom. If you don't have a faculty member, they must be given the freedom to complete these courses through the NPTEL or through the SWAM, and those credits must be transferred. So this is the one criteria. So curriculum aspect, you make a strong curricular, right? The second is teaching learning. So what do you mean by teaching and learning? I define technical education by three hands, three H. One is head. Head is the information. So all the information are not the knowledge, but a student must have to take a certificate to fulfill some mandatory requirement. Then the next is the heart system, value-based education. You go through the NBA. So NBA guideline, you go through the outcome-based education. One must have to put some of the mandatory paper of the finance, values and ethics, right? So the education must be value-based. It should be a purpose, a goal-oriented, right? So teaching, learning process, the pedagogy of the world has changed. If you find time, you go and search the National Science Foundation of the US. Earlier, the pedagogy was bottom to top.
Now they have changed the pedagogy. Now it is top to bottom. So in the top to bottom, the student, the institution must provide a good state of art labs. Where the student have any idea, they should come there and they can do experiments. The problem with Indian university is that we don't allow the student to experiment. We do the experiments only as a mandatory requirement of our university curriculum. But students must have the access of those laboratories. They must have some of the projects right from the first year to execute them. So make a group of the students and give a mini projects. In the NB also requirement, the last component is lifelong learning. So lifelong learning means a student must have the student progression is also one of the components. What do you mean by student progression? A student progression is a process that apart from the normal curriculum teaching, a student personality, there must be overall development of the personality. You have to also focus the psychoanalysis of the student. You must assessment where there is the inclination of the student. They must be promoted in the innovation. They must participate in cultural activity, sports activity. They must participate in the summer camp, right? Where they must be encouraged to solve the problem of the common man through the technology, right? Because you know the intermediate technology is a technology where the big players are not coming there. Suppose you have to solve a common man problem. I visited around Ranchi, where one group of the student of IIT Roorkee, they have started a company called Gram Urja, and they have set up a biogas plant there in the Gumla district, right? I visited there. I found that they have developed those plants in those villages where the villagers have more number of animals. And you know, I spent one full day and I came to know that the cost of the cow dung of 1 kg is 5 rupees. And the farmer is getting those benefit. They have developed now a gas cylinder that is costing only 400. Our government is giving those cylinder 1,000 even after the subsidy. So what is the purpose of the technical schools? See, they are converting the waste into the wealth. So the teaching learning process, you have to develop a methods where the student must be encouraged right from the first year to solve the problem of the common man, the industry, and the society, all the stakeholders. Because the technical education, I defined initially, 1 H is the head, getting a degree, getting information. The second A was the heart, and the third A is hand, that represent your skills. So you have to develop, you have to set up your lab so that the skills are being developed, right? The outcome-based education you have to develop. Then the research innovation. The technical education is known by how much knowledge you have generated. So every institution must generate some new knowledge. So new knowledge means those knowledge should be converted into a technology, into a process. So to be a standard practices, to set a standard practices, your R&D lab must be rich. The Honorable Secretary is also visible participating here. They must develop a central instrumentation facility in the colleges where a student and faculty must have access of those central instrumentation labs software so that they can innovate. They can generate some new knowledge, and those new knowledge can be converted into a patent, right? And they can be developed into a product, into a process. Then governance, leadership, and management. So governance, leadership, and management
So no institution can prosper without having a good governance, a good leadership. So good leadership, a leader, there is a difference between a leader and a manager. The leader is one who thinks beyond the horizon. A leader is one who visualizes the thing, what is happening, where the technology is going there, right? But manager only works on the set practices, right? So a good leader is one who visualizes. So you have to change your curriculum. You have to change, you have to add new branches, right? You have to add new labs. You have to allow your faculty members to participate in the other IITs and ISA and go abroad. You have to allow your student to regularly go into the industry and solve the problem. So good governance provides they are most adaptable with the change in the governing system. Because gone are the days of chalk and talk cultures. Now the student of the 21st century, they want excitement. So your curriculum, the teaching learning process must be exciting enough so that a student feel comfortable in your campus. And for the excitement, your laboratories, your infrastructure must be highly conducive for that to grow the personality of the student and the faculty there. So institutional values and the best practices. So every institution have to take some responsibility. So academic social responsibility, you just train your student, you just solve the problem of your student, right? You help some of your student internally. Also you help some of the villagers, some of the area, right? You adopt 5 villages, AICT is also requiring. You work on the other areas of the concerns where people want some solution. So NAAC covers all those 7 criteria, and same time being a technical institution, this is a institution specific, but you have to also go through the program specific. That program specific is your every program must go through NBA. And for that, there is another set of framework. So you combine all both together and start practicing those areas, develop your infrastructure accordingly, train your faculty member, your student, and finally, I'm sure this workshop is going to enlighten all the faculty member, making all the faculty member aware, and in the coming days, all the programs of the Bokaro Engineering College, Guru Gobind Singh, I hope under the leadership of Jaruhar Sahab is going to be accredited, and this institution will also get a good grade of NAAC ranking. With these words, thank you very much. And now the session is open for discussion. That's why I have not prepared any presentation. Whatever the question you have in your mind, you are free to ask. Yeah, one by one. Please go ahead. I love interacting with the faculty member. Yeah, please go ahead. And one feedback, I was going through the last presentation, who was the member who was presenting, because any PPT, it does not contain a big paragraph. Only the bullets should be there and sub bullets should be there. Yeah, Secretary sir, namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you very much. I am really happy and glad to see you and such an effective guideline which you have given to us. It's my pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. So any faculty member, any participants have any query, you are free to ask. Under my limitation, yes, sir, I have a question, sir, if you allow me. Yeah. Yeah, Shweta. Yes, sir. Professor Shweta, anybody Yes, have sir. any question, please communicate to me. Yes, sir. It's I'm having a question, sir. Am I allowed, sir? Yeah. Yes, sir. So my question is, being the IQSE coordinator, I would like to ask you that IQSE is suggested to work on 3 special pillars. The first one is the initiatives.
the second is the sustenance, and third is the enhancement. Sir, I would like to ask you about the sustenance. So how can we sustain the qualities which are initiated by the IQAC cell? Sustenance means how long you are going to practice these habits. If you are maintaining, suppose you are publishing 30 papers this year, right? So next year it should increase. So you have to make your environment, suppose the number of publication, how the number of publication will increase. More number of PG programs are there, more number of PhD programs are there. So you go through the IIT or NIT, why the publications are increasing? Because increasing, they are getting a good regular number of PhD scholars, right? So if you are having a industrial project, so naturally you are going to get the benefit. You are going to have a more number of the patent. So sustenance means how long you are maintaining those qualities, right? So for that, you have to make your infrastructure, make your environment so conducive that there will be a successive progress in the quality. Quality is increasing, right? Suppose you have got B, then next cycle B++. BIT Mesra was having B+. You go on the website. In the first cycle, BIT Mesra does not got A and A++. In the first cycle, BIT Mesra got B+, but in the second cycle, I was going through the website, they got A. So this is called successive progression. The management sit together, they assess and evaluated where are the deficiency. They did the SWOT analysis, strength, weakness, and the threat, right? And accordingly, they plan. Suppose I am giving you an example that computer science, there are major jobs are there, right? And you are not increasing the seats in the computer science, right? You have seats, you have increased the seat in the other branches. So there will be a problem of employment. But if you have one example of BIT Sindri, I am sharing, where I was HoD Secretary Sir, I was HoD of Electronics and Computer Science. I started the program IT. There was a dearth of faculty member. So other HoD called me a mad professor. He told me he has 2 departments and does not have a sufficient faculty, and he has started the IT program. But I sense that in the coming days, more number of jobs will be there in the IT. And the IT Dhanbad director, Professor T. Kumar Dr. and other got admission there. And this year I am giving you example, the Amazon gave 44 lakhs, and who were there? IT, a student of the IT department in the computer science. Still there is a dearth of faculty member. But now in this 21st century, the faculty are felicitated. What is best required for the student? You prepare your curriculum accordingly. What happens in India, that I am a teacher, you know, the change in technology is boon for the younger people, but change in technology is very hard for the older people to cope up. So accordingly, they put the same wine in another bottle. And they say that we have changed the curriculum. So sustenance means you see where the industry is going, and accordingly you change your curriculum, you strengthen your laboratories, you strengthen your environment ecosystem so that the quality will maintain. Is it clear, Professor Sweta? Yes, sir. Or somehow I have Yes, not sir. Thank you so much, sir, for the detailed explanation. Yeah. And yes, sir. Any other question? Yeah, I request the other participants to kindly put your questions or queries if you have any. Okay. I request Anupriya ma'am to take ahead. Okay, so now I would like to invite the resource speaker of today's valedictory session, Professor Dr. Neelesh Pandey, the NAAC Advisory Sir.
So, sir, please share your view and keywords on NAAC, revised assessment and accreditation framework. Yes, Neelesh, sir. जी Am I allowed to leave the meeting? Yes, sir. Sir? Sir, busy. Yes, sir, you can. Sir, thank you so much for your presence, sir. Yes, sir. Yes, Dr. Neelesh Pandey, sir. ओके, थैंक यू मैम। अभी पहले मैं सुन रहा था एनईपी के बारे में, घोषाल सर ने बात कर रहे थे, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। और जब एनईपी की बात करते हैं, वैसे मैं आप लोगों ने काफी, मैं एक सप्ताह से आपका प्रोग्राम चल रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जब व्हेन वी टॉक अबाउट एनईपी तो वी टॉक अबाउट अ रीजनल लैंग्वेज। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज के लिए अगर मैं इंग्लिश में ही से बात करूं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं मिक्स करके बात करना चाहूंगा, ज्यादातर हिंदी में ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी जी सर, हाँ, नैक के बारे में काफी अच्छे आपके स्पीकर, जो एक सप्ताह का कार्यक्रम चला है, 1 वीक का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला है, वो काफी, मुझे भी लगता है, मैंने अभी लास्ट सेशन अटेंड किया जहां 7वें क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे, और अभी डीके सिंह सर का भी मैंने सुना उद्बोधन, काफी मुझे लगता है कि जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं आपके इस प्रोग्राम में, उनके लिए काफी लाभप्रद होगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। सबसे पहले तो मैं गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों से मैं वार्तालाप कर सकूं, इंटरेक्शन कर सकूं, और साथ ही सेक्रेटरी जो आपके ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं सिंह सर है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया। तो जैसे कि आपने 7वें नैक के बारे में काफी बता दिया कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, हमें मुझे लगता है प्रोसेस भी काफी हद तक पता है आप लोगों को, और ये 7वें क्राइटेरिया में क्या क्या क्वेश्चंस जो हम लोग फ्रेम किए हैं, लगातार उसमें अपडेशन भी चलता रहता है। तो क्योंकि हम लोग, मेरे पास ईस्टर्न रीजन है, और मैं जैसे अभी बीच में मैंने झारखंड में रांची आया था नैक अवेयरनेस प्रोग्राम में भी, और हम लोग लगातार एक फीडबैक लेते रहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को कहाँ दिक्कत आती है, और हम ये मैंडेट कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी क्वेश्चंस वी आर पुटिंग इन द मैनुअल, जैसे हमारे कई मैनुअल्स है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, लाइक यूनिवर्सिटी का है, ऑटोनोमस का है, एफिलिएटेड यूजी पीजी का है, और हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कई हमारे मैनुअल हैं, और हम मैनुअल को लगातार अपडेट भी करते रहते हैं। हमारे कई उसमें कमिटीज मेंबर्स रहते हैं, जिसमें वाइस चांसलर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो वी continuously update as per the new accreditation which is coming after the many of the states, मतलब कई राज्य, अपने कर्नाटका ने सबसे पहले एनईपी इंप्लीमेंट किया, उत्तर प्रदेश में गया था, they have also implemented somehow, तो कई स्टेट्स ने अपने एनईपी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो उसी के मद्देनजर हम लोगों ने काफी अपने मैनुअल्स को अपडेट करके एक नया मैनुअल जो अभी लागू हो गया है, 1 जून से ये लागू हो गया है, और ये नैक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो मैडम मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ नंबर डाटा रहेंगे दैट विल बी, मैं शेयर करना चाहूंगा, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो मैं शेयर कर लूँ मैडम? शेयर मीन्स पीपीटी, आपको दिख रहा है मैडम? सॉरी, यस सर, दिख रहा है सर। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कई मैनुअल्स हैं, और कई मैनुअल्स के बाद हम लोगों ने काफी, मतलब जो हम लोग स्टेक होल्डर जब इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, उनसे अवेयरनेस प्रोग्राम वहां करते हैं, तो हमका जो भी फीडबैक लिया जाता है, जो क्वेश्चन आंसर में उनको जो भी दिक्कतें महसूस होती हैं, उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक नया मैनुअल अभी डिजाइन किया, और ये लागू हो चुका है। ये मैनुअल उनके लिए लागू होगा जिन्होंने IIQA, जो इसको कहते हैं, जो एक टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको उन्होंने 1 जून या उसके बाद से अप्लाई किया है, उनके लिए न्यू रिवाइज मैनुअल फॉर एफिलिएटेड कॉलेज लागू होगा, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर देम, जो कि यदि किसी कॉलेज ने 31 में या उसके पहले किया है,
तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी अगर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मैनुअल में डायरेक्ट होंगे, या पीजी मैनुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, या टेक्निकल वाले हैं तो टेक्निकल हमारे लिए कोई ऐसा सेपरेट मैनुअल नहीं है, हम उसको यूजी पीजी में ही रखते थे। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि 1 जून से जो मैनुअल आए, मतलब जो इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये जनरल इंस्टीट्यूशन के लिए और टेक्निकल के लिए, मेडिकल के लिए हमारा अलग मैनुअल है, लॉ के लिए अलग मैनुअल है, संस्कृत के लिए तो ये मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि समय सीमा कम है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मैनुअल हैं अभी तक हमारे NAAC वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, बट ये जो मैनुअल है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैनुअल कैसे पहले के मैनुअल से काफी इंस्टीट्यूशंस के लिए इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, बिकॉज दिस मैनुअल हैज बीन रिवाइज्ड एंड द नंबर ऑफ मैट्रिक, जो नंबर ऑफ मैट्रिक जो प्रश्न पूछे जाते थे QNM और QLM के द्वारा, QNM और QLM मुझे लगता है बता दिया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, QNM जो होता है, जो इंस्टीट्यूशन जब SSR भरता है तो QNM और QLM का क्वेश्चंस उनको जवाब देना पड़ता है, और ये जो QNM क्वेश्चंस होते हैं ये DV पार्टनर, एक थर्ड पार्टी होता है जो कि उसको वेरीफाई करता है। जो QLM होता है वो पीयर टीम मेंबर, जब इंस्टीट्यूशन प्री क्वालिफाई कर जाता है तो हमारे कॉलेजेस के लिए पीयर टीम मेंबर्स हम लोग भेजते हैं, और वो पीयर टीम मेंबर्स, जैसे इसमें 3 मेंबर्स जाते हैं कॉलेज के लिए, अगर यूनिवर्सिटी है तो मिनिमम 5 से लेकर 12 तक लोग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा वो यूनिवर्सिटी है। जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अगर वहां पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज्यादा है तो उस हिसाब से मेंबर्स हम लोग ज्यादा होते हैं। तो जो पीयर टीम मेंबर्स होते हैं उनमें एक चेयरमैन होता है, मेंबर कोऑर्डिनेटर होता है, मेंबर होता है, ये मुझे लगता है सभी को पता है, लेकिन एक बार जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ज्यादा अच्छा आपका मतलब आपका पकड़ ज्यादा उस चीज में बन जाती है, तो इसीलिए मैं एक रिवाइज रूप में एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके 3 मेंबर्स जाते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं आपके जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पीयर टीम विजिट जा रही है, तो जैसे उनके अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, उस आधार पर इन 3 लोगों का, आदमियों का जो चयन, मतलब जो पीयर टीम मेंबर्स का जो चयन होता है उन्हीं के आधार पर होता है कि जो वो प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहा है उसी के आधार पर हम पीयर टीम मेंबर भेजते हैं। तो अब बात करते हैं न्यू रिवाइज मैनुअल फॉर एफिलिएटेड कॉलेज की। तो जो पहला जो मैट्रिक्स था हमारा, जो एग्जिस्टिंग, अभी आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध, अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशन वो फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने 31 मई 2022 के तक या उससे पहले तक जिन्होंने भी NAAC के IAQ एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया है उनके लिए वो वाला मैट्रिक एप्लीकेबल है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन 1 जून या उसके बाद दे हैव अप्लाई किया है तो उनके लिए ये रिवाइज मैनुअल एप्लीकेबल हो गया है। तो रिवाइज मैनुअल जो है वो उसमें जो मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, उसमें जो पहला जो मैट्रिक था वो 93 और 96 था, और अभी जो रिवाइज मैट्रिक है एक बार आपसे अनुरोध है कि आप म्यूट कर लें। तो सारे पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है, जिनका भी ऑन है प्लीज वो म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। जी सर। थैंक यू मैडम। तो जो ये जो पहला मैट्रिक्स था, जैसे मैंने बताया, जो एफिलिएटेड यूजी के लिए था वो 93 था, और जो अपडेटेड अभी जो एफिलिएटेड यूजी था वो 93 था, और जो एफिलिएटेड पीजी के लिए था वो 96 मैट्रिक्स था। लेकिन अब जो रिवाइज मैनुअल है, इन दोनों को अब क्या किया गया, क्योंकि काफी हम लोगों के फीडबैक मिले, उसके फीडबैक के तहत हमने ये यूजी और पीजी मैनुअल को एक कर दिया, और अब इकलौता मैनुअल आ गया है जो कि रिवाइज एफिलिएटेड मैनुअल है। ये दोनों यूजी पीजी के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि क्या होता है, पहले अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर एक भी पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो उसको एफिलिएटेड पीजी मैनुअल में जाना पड़ता था, और यदि उसने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो उसे एफिलिएटेड यूजी मैनुअल में जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है, यदि आपका कितने भी यूजी हो या पीजी हो, आपको अगर वो कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, ऑटोनोमस के लिए अभी भी हमारा डिफरेंट मैनुअल है, आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर इफ यू आर हैविंग एन एफिलिएटेड कॉलेज, हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज, then you will be directed to that particular metric after you apply on from 1st June and after। तो इसमें जो मैट्रिक्स थे ये रिड्यूस कर दिए गए हैं, 93 जो और 96 जो थे उससे 55 मैट्रिक्स थे, अब रिड्यूस कर दिए गए। और इन 55 मैट्रिक्स, दिस 55 मैट्रिक्स हैव अ QNM एंड QLM, जैसा कि हर मैट्रिक्स पहले भी जो पूछा जाता था उसके आधार पर। तो ये जो QNM मैट्रिक्स है ये 34 है इसमें अभी रिवाइज मैनुअल में,
और जो QLM है वो 21 है। इसके बाद बात करते हैं जैसे कि जो हमारा NAAC का एक्रेडिटेशन असेसमेंट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें वो बेस्ड है क्राइटेरिया का, जो क्राइटेरिया जो कि पूरा आपको बताते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे टीचिंग लर्निंग पैटर्न, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, जैसा कि अभी D.K. सिंह सर बात कर रहे थे, तो वो सबको रिलेट करके क्राइटेरिया 7 में इसको पिरोया गया है, उसके अंदर अंतर्गत रखा गया है ताकि इंस्टीट्यूशन का क्वालिटी को आंका जा सके। अब मैं एक चीज और बताना चाहूँ, जो हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए 8 क्राइटेरिया, क्योंकि जो 8वां क्राइटेरिया स्पेसिफिक रखा गया है, जैसे यूनानी है, आयुर्वेदा है, डेंटल, तो ये हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ 8 क्राइटेरिया है। बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे ऑटोनोमस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ, मैनुअल हो, संस्कृत हो, योगा हो, जितने भी इंस्टीट्यूशन डुअल मोड हो, उन सब के लिए 7 क्राइटेरिया रखे गए हैं। फिर इन क्राइटेरिया 7 के अंतर्गत की इंडिकेटर्स आते हैं। अब ये की इंडिकेटर्स जो कि पहले जो एफिलिएटेड UG PG के लिए था वो 34 था, आज अभी वर्तमान में जो अपडेटेड है वो 32 है। फिर जो मैट्रिक्स आते हैं, अभी मैंने जैसे बताया कि अब 55 हो चुके हैं, जिसमें क्वालिटेटिव मैट्रिक्स जैसे कि आप देख सकते हैं PPT में 21 है और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स 34 है। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अब पहले जो रेशियो होता था 72:28 होता था, आज की डेट में हम लोगों ने थोड़ा PA टीम मेंबर्स को थोड़ा का जो रोल है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है हम लोगों ने। परसेंटेज के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 62:38% हो चुका है। तो ये हम कोशिश किए हैं कि इंस्टीट्यूशन को और फायदा दे सके, ताकि इंस्टीट्यूशन को जो भी कई बार ऐसा होता था कि उनके मतलब जो पैटर्न था कि कई क्वेश्चन उनके पास जवाब नहीं बताया जाता था। मैं भी उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। तो जैसे आपका ये हम लोग के नंबर ऑफ टीचर पार्टिसिपेटिंग इन BOS मीटिंग, करिकुलर डिजाइन, तो ऐसे कई कॉलेजेस होते थे जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, इवन देन उनके टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन हम हमारे जो SOP में, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसी के तहत ये इस मैनुअल के लिए भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हमारे पास, और उसी के तहत आपको सारा डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके इतर आपको नहीं, क्योंकि हम उसमें क्लियरली लिखे हैं जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आता है तो हमारा ये पहला ऐसे ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज आप हमारे मैनुअल को पढ़ लीजिए, प्लस हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को देखिए। तो वो एक टाइप का कुंजी है, दैट इज अ काइंड ऑफ गाइड फॉर देम, क्योंकि मैनुअल में किस मैट्रिक्स में आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि इनपुट देना आसान, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि NBA और NAAC में यही डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NAAC में ज्यादा अच्छा क्वालिटी फैक्टर है, बट NBA और NAAC में ये है कि NBA प्रोग्राम एक्रेडिटेशन करता है और हम लोग इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन करते हैं। हमारे लिए ये नहीं कि आपके कितने प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में हमने आपका एक्रेडिट किया, आपके पास 5 प्रोग्राम थे, अगले साल आपके 6 प्रोग्राम हो गए, तो ऐसा नहीं है आपको दोबारा ना, जो आपका 5 साल की अवधि दी गई है वैलिडेशन जो दिया जाता है NAAC एक्रेडिटेशन का, उसके बाद आप भले उसको अपडेटेड डाटा लेके आ सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि हम कभी भी प्रोग्राम एक्रेडिटेशन नहीं करते, हम एज सच पूरा इंस्टीट्यूशन वी डू द इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन, नॉट द प्रोग्राम एक्रेडिटेशन। फिर जैसे कि एक चीज और बताते हैं कि हमारा जो होता है हर एक मैट्रिक्स, जितने भी चाहे पहले एक्सटेंडेड प्रोफाइल से लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन तक सारे मैट्रिक्स जो हमारे होते थे वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर वैलिडेट किया जाता है। हम लोग सिर्फ इनपुट, हम जैसे हमारा, आप कई लोग हमारे ख्याल से NAAC के सारे प्रोसेस से अवगत होंगे, कई लोगों के लिए नया भी होगा। तो उनके लिए जैसे मैं बता दूं कि जब आप SSR भरते हैं और DVV वैलिडेशन होता है, तो SSR में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा जो एक्सेल फाइल होता है उसी में आपको इनपुट प्रोवाइड करना है, और उसका ये भी रहता है कि फॉर्मेट मत चेंज कीजिए क्योंकि उसी से कैलकुलेशन होता है आपके स्कोर का। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो डॉक्यूमेंट, किस मैट्रिक्स के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये अभी भी रिवाइज मैनुअल में भी यही प्रोसीजर है। ऐसा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मैट्रिक्स को कम किया गया है ताकि इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा हो सके। तो ये एक टाइप का बार ग्राफ है, ये मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो जस्ट फॉर अ चेंज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका IAQ एक्सेप्ट हो गया तो आप SSR फिलिंग में जाएंगे। अगर आपका मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं होता तो जिस दिन आपका रिजेक्ट हुआ है उस दिन से 2 बार आप और आ सकते हैं IAQA के वो जो सेम फीस होता है, जैसे इसको बोलते हैं 29,500 होता है, प्लस मतलब ये इंक्लूजन ऑफ GST का होता है। यदि मान लीजिए आपने IAQ अप्लाई किया और आपका IAQ रिजेक्ट हो गया, तो आप जिस दिन रिजेक्ट हुआ उसके 1 साल के भीतर आप 2 बार फिर आ सकते हैं
अगर आपका IAQ एक्सेप्ट हो जाता है तो SSR आपको 45 दिनों के अंदर में जमा करना होता है। पहले हम एक्सटेंशन दे रहे थे, आजकल नॉर्मलसी होने के कारण हम अब एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई स्पेशल रीजन है, आपका मतलब इलेक्शन है या आपका कुछ पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न आ गया है मिनिस्ट्री से, मतलब या आपको कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, तो उस अवज में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें स्पेशल केसेस में दिया था। लेकिन अभी एज सच कोविड-19 के लिए हम लोग एक्सटेंशन देना बंद कर चुके हैं। फिर डीवी प्रोसेस है। डीवी प्रोसेस जैसे मैंने बताया, डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, जो कि हमारे थर्ड पार्टनर के थ्रू होता है। फिर साथ ही साथ उसके SSS प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसका क्वालिटी उसके स्टूडेंट्स बताते हैं। तो इसीलिए हमने एक स्पेशल, ये हमें 2017 रिवाइज एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क से हमने इसको लागू करके रखा है। फिर यदि अगर इंस्टीट्यूशन इन सबको स्कोर में अगर 25% अगर वो लाता है, तभी उसके आप पीएटी विजिट होती है। ये भी उसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन कई इंस्टॉलमेंट में जो फीस भरता है, अगर वो मान लीजिए प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसका आगे का वो प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाता है और फिर से उसको 1 साल के बाद आना पड़ता है हमारे IAQA प्रोसेस में। फिर 6 मंथ के बाद आना पड़ता है। अब ये बात आता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो मैंने बताया जो ईमेल के माध्यम से क्वेश्चन भेजे जाते हैं, एंड देन पीयर टीम विजिट होता है और लास्टली ग्रेड अनाउंस किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट है कि आप जैसे देख सकते हैं, IAQ अप्रूव है, SSR सबमिशन, देन DV क्लैरिफिकेशन, प्री क्वालिफाई हो गया तो पीयर टीम विजिट होगी आपकी। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया सभी के अभी सेम है, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस और एफिलिएटेड कॉलेज के भी। की इंडिकेटर्स भी सेम है, बस एफिलिएटेड कॉलेजेस में अभी इसको 2 की इंडिकेटर्स कम किए गए हैं। QNM मैट्रिक्स जैसे आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में 79 है, ऑटोनोमस से 72 है, एफिलिएटेड कॉलेज में 34 है, QLM में 36 है, 35 है और 21 है। तो ये ऐसा जो टोटल मैट्रिक्स होती है वो 115 है यूनिवर्सिटीज के लिए, ऑटोनोमस के लिए 107 है, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए 55 है। ओके, फिर इसके बाद ये क्राइटेरिया वाइज ये डाटा आपको मैंने बस समझाने के लिए किया। आप जैसे इसको हमारे NAAC वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। जैसे करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, और ऑटोनोमस कॉलेज के लिए होता है, तो इसलिए उनको वेटेज है। आपके लिए जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं ये वेटेज डिफाइन किया गया हर एक की इंडिकेटर के तहत, जिसमें करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, करिकुलम इनरिचमेंट है एंड फीडबैक सिस्टम। तो ये सारे के अवज में आपका जो वेटेज डिफाइंड है, इसी के आधार पर आपका स्कोर आता है हर पर्टिकुलर के लिए। एक क्राइटेरिया 2 के लिए है, एक क्राइटेरिया 3 के लिए, जिसको रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन की बात करते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि सस्टेनेंस की, तो कोई भी चीज को सस्टेनेंस के लिए आपको इफेक्टिव ग्रांट की जरूरत है, कि यदि आपका अगर रिसर्च आपको इफेक्टिव मोड में करना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर ग्रांट, या आपको जैसे आप सर बता रहे थे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इवन इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकता है, आपके अपने फैकल्टीज मेंबर को इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम हर चीज बोलता है कि अपने आप को अपडेट करें। जैसे कोरोना ने हमको ये सिखा दिया कि यू हैव टू गो मोर एंड मोर फॉर अ डिजिटलाइज सिस्टम, जहां पर ये जो आप जैसे सर बता रहे थे चॉक और बोर्ड का कंसेप्ट था, आजकल मोर, और जैसे मैं आपके साथ अभी इंटरेक्शन इस जूम जो सॉफ्टवेयर उसके तहत कर रहा हूं, तो ये हर एक चीज को अपडेशन जरूरी है। उसी तरह रिसर्च को भी आपको मोर इनोवेटिव क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत रखने के लिए यू हैव टू बी मोर एंड मोर ऑफ क्वालिटी फ्रेमवर्क ओरिएंटेड। फिर ये आपका क्राइटेरिया 4 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, जिसमें हम जैसे कि सर ने बता रहे थे प्रोग्रेशन के बारे में, तो हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स अभी मतलब रिटेन रखे हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव गॉन फॉर द फर्दर स्टडीज, गवर्नमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये सारे जो मैट्रिक्स हैं ये जहां तक सेम है, सिर्फ इसमें वेटेज की थोड़ा चेंजेस किए गए हैं ताकि इंस्टीट्यूशन को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं QNM और QLM, जैसे हर पर्टिकुलर मैट्रिक्स करिकुलर एक्सपर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। टीचिंग लर्निंग को भी देखें तो यहाँ पर काफी हद तक हम लोगों ने QNM को साथ साथ ज्यादातर हमने QNM को रिड्यूस किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता था इंस्टीट्यूशन को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हमने ज्यादातर जो QNM को फोकस में रख के काफी चेंजेस किया है ताकि इंस्टीट्यूशन को फायदा मिल सके। तो ये जो सिस्टम जनरेटेड स्कोर था,
अब हमने जो भी नया जो भी एफिलिएटेड मैनुअल है उसका यहाँ पर 62% जो है वो QNM को दे दिया गया, यानी डीवी पार्टनर्स को दिया गया है, जो आपका 62% है उसके आधार पर वैलिडेट होता है। पीयर टीम जजमेंट में अब 38% दे दिया गया, जो 70-30 का रेशियो था अब थोड़ा ज्यादा पीयर टीम विजिट को दिया गया है, तो अभी 38% है, प्लस ट्रिपल एस स्कोर जो कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे कहते हैं, जो कि आपका जब पीयर टीम विजिट हो जाता है तो ये तीनों को स्कोर को एक साथ जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। और ये तो डाटा वैलिडेशन प्रोसेस जो आज भी इस मैनुअल के लिए भी लागू है। तो मैं जैसे दिखाना चाहूंगा कितना आपका, जैसे जो पहला मैनुअल था उसमें कितना हुआ, कितना था और आज की डेट में कितना हो गया है। जैसे करिकुलर एस्पेक्ट्स में 11 जो था उस समय एग्जिस्टिंग मैनुअल मैट्रिक्स था, इस समय 6 कर दिया गया है। उसी तरह टीचिंग लर्निंग में 16 से 10 किया गया है। तो ये आप स्कोर देख सकते हैं, और आप जब दोनों मैनुअल देखेंगे तो आपको मैं स्कोर बहुत ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी अभी जो पर्टिकुलर है मैट्रिक्स काफी कम कर दिया गया है। हम लोग इसको इसलिए मैं बताना चाह रहा था क्योंकि ये जो अब क्वालिटी फ्रेमवर्क है इसको मोर कॉम्पैक्ट किया गया है, और ये इसलिए कॉम्पैक्ट किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि कई रीजन वाइज इंस्टीट्यूशन डिफर करते हैं, क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कई इंस्टीट्यूशन के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, कई इंस्टीट्यूशन के पास नहीं डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इसको अभी नया रिवाइज बना के दिया है, ताकि ये जो एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और ये बहुत इजीली कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अच्छा क्वालिटी एक्सेल करना चाहता है, अगर ही सच मतलब इंस्टीट्यूशन जो भी उसके स्टेक होल्डर आर वेरी मच सीरियस, तो ये जो मैट्रिक्स जो नया आया है, जो नया मैनुअल आया है, इट इज वेरी मच फीजिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा। जैसे ये तो QLM है, वेयर इंस्टीट्यूशन हैज टू रिप्लाई इन 500 वर्ड्स। तो हमने जैसे नंबर ऑफ एड ऑन प्रोग्राम, और जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ टीचर्स पार्टिसिपेटिंग इन द BOS मीटिंग, करिकुलम डिजाइन, तो उस मैट्रिक्स को हमने ऐसे कई मैट्रिक्स को यहाँ पर अभी कम कर दिया। जैसे एड ऑन सर्टिफिकेट, जैसे सर बता रहे थे कि उस समय 10 साल पहले, तो जब मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो एडवांस जावा उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज कहलाता था, लेकिन आज की डेट में वो पार्ट ऑफ द करिकुलम हो गया है। तो एड ऑन सर्टिफिकेट का मतलब हो गया जैसे जो इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ जनरल कोर्स, जो भी प्रोग्राम, जैसे मैं अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ तो वो पार्ट ऑफ जनरल कोर्स नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू पर, सो दैट कि जो बच्चा अगर, क्योंकि क्या होता है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में काफी होता है। जब मैं भी गया था तो मुझे जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से काफी इतर होता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन इसमें ये चीज पुट किया है कि क्या बच्चा इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाहर जाता है कि नहीं, प्लस एक्सटेंशन एक्टिविटी के लिए होता है कि नहीं। एक जस्ट मिनट, सॉरी। तो ये ऐसे कई क्वेश्चंस, मैं अब उसको डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैक के वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक आप लोगों को इस एफिलिएटेड मैनुअल के बारे में बता दिया है। यदि कोई आपका कोई प्रश्न हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड आंसर, और वी हैव बिकॉज देयर इज अ मीटिंग विद I have to go, so that's why if any of them participant wants to ask any of the question, they can ask. हेलो। हाँ जी सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी सर, प्रीवियसली नैक का जो ओल्ड मैनुअल था उसमें ना ऑप्ट आउट का ऐसा कुछ ऑप्शन था, कुछ मार्क्स का, 50 मार्क्स के लिए। तो सर क्या इस बार भी ऐसा कुछ एप्लीकेबल है? नहीं मैडम, ऑप्ट आउट मार्क्स ऐसा कुछ? क्योंकि मैडम हम लोगों ने इतने मैट्रिक्स कमजोर, मतलब कमजोर इन द सेंस कम कर दिया कम कर दिया थोड़ा। हाँ, बट हम लोग सॉरी कमजोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कम कर दिया है कि आप 34 मैट्रिक्स में भी करें इंस्टीट्यूशन जवाब नहीं देगा, क्योंकि तो क्या आप जैसे हम लोग पहले 7 मैट्रिक्स तक अलाउ करते थे, तो अगर उतना भी कम कर देंगे तो फिर वो इंस्टीट्यूशन क्वालिटी फ्रेमवर्क कैसे कर सकते हैं। तो इस बार कोई मैट्रिक्स नहीं है इस नए वर्जन के लिए। धन्यवाद सर। और भी किसी पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।
Thank you, Dr. Neelesh Pandey, sir, Assistant Advisor NAAC. I'm very grateful that you have joined this session and enlightened us. And our participants really had an interaction, direct interaction with the accrediting body representative. So many queries are sorted out from your great presentation, sir. Thank you. हेलो जी, पूछना चाहते हैं सर? आप पूछ सकते हैं। जी सर, ये 2.4 का जो है सर, टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, उसमें सर 2.4.1 में है परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। ये सर 15 नंबर का है। तो ये कोई मैकेनिज्म है सर कि ये हमें इस क्राइटेरिया में कोई इंस्टीट्यूट कितना मार्क्स ला सकता है? इसका कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो रहा है। नहीं, मतलब आप चाहते हैं कितना मिनिमम होना चाहिए? नहीं, मतलब हम सेल्फ जजमेंट करना चाहते हैं कि हम जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से 15 में से हमें कितना मिल पा रहा है। वो फाइनल पीयर टीम डिसाइड करेगी कितना हमें मार्क्स मिलेगा, बट एक सेल्फ जजमेंट में करना चाह रहा हूँ। नहीं, पीयर टीम में वो क्यूएलएम नहीं है। मैंने बताया क्यूएलएम जो होता है वो पीयर टीम क्यूएनएम ये दिया हुआ है। हाँ, तो क्यूएनएम नहीं डिसाइड करता, वो टीवी पार्टनर का होता है, वो इवेल्युएट करता है। उसके लिए सर कोई मैकेनिज्म है कि हम लोग खुद से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं? सर देखिए, असल में हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये नहीं बताते, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल बेंचमार्किंग का जो हम लोग बात कर रहे हैं, बेंचमार्किंग क्योंकि क्या होता है ना, ये एक हम लोगों का एक वो जैसे सर बता रहे थे साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि अगर हमने आपको ये बता दिया कि साल में आपको 15 पेपर पब्लिश करना है, दैट इज द एक्सट्रीम, तो आप 15 आप नहीं करेंगे। तो मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब एज सच इन जनरल की बात कर रहा हूं। तो ये हम लोगों ने क्वालिटी फ्रेमवर्क का नहीं मतलब जो हमने बताया बेंचमार्किंग, आप जितना पब्लिकेशन कर सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन जो नंबर ऑफ टीचर की आप बात कर रहे हैं, तो ये आप नंबर ऑफ टीचर को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट का हिसाब है उसके हिसाब के तहत आपके रिक्रूटमेंट होती है। आपका गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है सर? है तो सोसाइटी के अंदर सर, बट द प्रोसेस है अंडर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो आपका बस आप इतना करिए कि जो भी आपका सैंक्शन सीट है अगर वो पूरा भरी है, आप उतना कि आपके मैनेजमेंट उसको सैंक्शन सीट है उसको फिलअप कर सके। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन उसमें ऐसा, आप जब पढ़ेंगे हमारे एसओपी में, हम ये देते हैं कि हमारी ये नहीं होता कि आपके यहाँ वो परमानेंट टीचर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो या के लिए हो। हाँ जी, अगर वो अगर पूरे एकेडमिक ईयर के लिए है वो आदमी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स एंड टू द रिजल्ट, मतलब जब उसका एग्जाम होगा रिजल्ट आएगा, हम उसको परमानेंट टीचर मांगते हैं। तो आपके लिए हो सकता है कि आप जो भी सैंक्शन पोस्ट आपके यहाँ सैंक्शन है उसको आप पूरा फिलअप करें और वो इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। और क्वेश्चंस है किन्हीं के पास? तो थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आपके प्रेजेंटेशन से हमें नैक रिवाइज्ड मैनुअल को अच्छे से समझने को हम लोग समझ पाए, मतलब थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर सरनजीत सिंह, an eminent academician and Pro Vice Chancellor KIITS Bhubaneswar, Odisha. Sir, kindly come on. Yes, sir. And share your experience. Thank you, Professor Shresthe, and very esteemed chief patrons of this faculty development program, Shri Surendra Singh ji, Professor Dr. Vijay Pandey, my colleague as well, Vice Chancellor for Jharkhand University of Technology, Ranchi, Dr. A.K. Chaudhary, respectable Registrar JUT, Ranchi, very esteemed Secretary of GGES Society, Bokaro, Shri S.P. Singh ji, and very esteemed chief guest, Professor D.K.Singh, Director BIT Sindri, an esteemed resource person who has been invited by the college, Dr. Neelesh Pandey ji, who is the Assistant Advisor to NAAC, Bangalore, and all the esteemed faculty members and everyone on the call today. I'm really thankful to Professor Priyadarshi, the Director for Guru Gobind Singh Educational Society Technical Campus, College of Engineering and Management, for conducting
this 5-day workshop, 6-day workshop, and inviting me on the valedictory session here to have a very small, brisk interaction with all of you. First of all, I'm really excited as I have convened my message in the inaugural as well, where I said that it is really very pleasing to see that the college has been marching ahead with respect to accreditations and establishing quality benchmarks and standards, which is very, very essential. And I congratulate each one of the faculty member who is there on the platform today and has been involved in this workshop. Because of the paucity of time, we are running almost an hour late. I'll not speak much, and it's also a difficult task when you have been given an opportunity to speak after esteemed speakers like Professor Singh and Dr. Pandey, who has deliberated so nicely about NAAC, including the entire framework of the NAAC. But I also have a meeting which I have to join in another 10-15 minutes, so I'll keep it short. I'll only try to bring in few important things as far as my treatise with NAAC accreditations, NBA accreditations, IET accreditations, EBET accreditations, which I'm in part of. And I've been interacting with a lot of people because of this. KIIT as such, when I represent KIIT as a Pro Vice Chancellor, we are also going for a 3rd cycle of NAAC in this month itself. And we are in the process of preparing every documents. So my experience of creating documents while preparing for NAAC, I'll just sum it up here in front of all of you who are involved in preparation of the documents which will be required to be submitted to NAAC for assessment, or capturing the data or the details which will be required for creating reports which will be submitting. And I'll be just bringing 4 things into importance here. And I'll request Professor Shweta or maybe anybody, if you are recording it, it's good, because that will help. I feel so it will help even you're preparing those documents. The first thing is you have to, I know the syllabus for an affiliate college. Yeah, thank you, madam. So syllabus for an affiliate college, it will be by the governing university. In this case, it is Jharkhand University of Technology. So you don't have much a hand to play around the syllabus. But my suggestion is, when you look into syllabus, the course content, the program educational objectives, the POs, the course outcomes, the delivery of this content, the pedagogy, and including a little bit of whatever research, R&D, publications, which the college has been involved in. These documents must be in line with the vision and mission of the schools or the departments. So suppose a mechanical engineering school has certain mission and vision. While preparing these documents, the mission and vision must be kept in mind, because these are some of the expected areas where you will be having questions coming in. And then it must be also aligned with the vision and mission of the college, of the institution. And my suggestion is that while you prepare this, please keep in mind that how you are addressing, in your case, at least regional and national level issues. So there could be a lot of regional, national, and international level issues. So there might be a lot of queries which people will ask, that while you are delivering this to your students and you are preparing your students, which are going to the future citizen of this globalized world, how you have been actually preparing them with respect to the burning issues, the latest issues of regional, national, international. So that has to be kept in mind. Another important thing could be, what are the value additions which you have been doing? And that value additions again will be around professional ethics, human values, environmental and sustainability, sustainable development goals, gender issues, livelihoods. Because you are situated in Bokaro, and then Bokaro is a district in Jharkhand, which is a tribal state. So what is an impact on rural development and tribal issues or resources? Is any indigenous skill developments we have done, or maybe anything I've done in the renewable energy? So maybe those areas, sustainability, renewable
energy and those kind of stuff might be of some importance, because you may expect the committees to be knowing, asking questions around that, because run-of-the-mill questions will come because you will be part of the first phase. So this will happen. So this is my second suggestion. Third will be, while you are calculating the attainments, that has to be kept in mind, because the COs and the program objectives which you will be using for those calculation documents will come very handy, because you will be asked for those proofs and evidences of that, how you are attaining those things. And again, they may also ask that what are the action taken reports, so strategic action taken reports. And I'm sure Neelesh sir will also agree on all this. The fourth point could be being an affiliate college, and that too situated in Bokaro, and then you will be having a lot of students coming from a tribal background, or the students who are not or can be clubbed into or bucketized into as a doubly accelerated or accelerated groups. I mean to say, low learners, fast learners, and high learners. So how you do bucketize low learners and fast learners? And if there are slow learners, then what you're doing for the slow learners? You have some programs where you do some kind of bridge courses, some kind of remedial classes, what extra mile which you actually do for this kind of students. You have some kind of short semester for them in the summers, and so on and so on. Apart from that, a lot of queries may come in, but I feel so these all will be very important. And my last suggestion would be, and which will be with the principal who is there on the call today, along with the very esteemed secretary of the society, that you must conduct an academic audit. And probably before you go into NAAC, you can create a small working group with few members, senior members, faculty members from your college or in around your college, like Professor D.K.Singh or from IIT Dhanbad or from BIT Mishra, or even KIT can come in, where some of my faculty members who are deeply involved with various types of accreditations. And probably, I don't know, but there could be retired professors from or retired directors from NITs and IITs who can be a part of this small peer working group, who can come and do a little assessment with you, because all this osmosis of or transfer of knowledge with respect to accreditation has to pass on. Doing a workshop is a commendable job, because this is the first step. This is the first step, because you are trying to bring in all faculty members on the same page. You are trying to instill a culture of quality within the institution. The quality has to be instilled, as I mentioned during the inauguration, that it has to go into your DNA. And when it goes into DNA, but to march ahead faster and to acquire certain understanding of SOPs and the best practices happening around in Jharkhand, or maybe in Eastern India, or maybe nationally or abroad, you need to have a fresh air coming in the form of a committee. And this committee can be of some very esteemed retired people. And I think Professor Neelesh can also help you in getting some people who can help you in getting these academic audits done. So these are 4-5 suggestions from my side. And I'm very happy to be a part of this agenda today. And I'm thankful to, again, the entire management of the society, including Professor Priyadarshi. And as you all know, I do come from the same place, so I'm always available for any help if you require from my side. With this, I take your leave, and a very good afternoon to everyone. Thank you all. Yes, thank you so much, sir, for your suggestion and guidance, and for your appreciation words, sir. Thank you for joining this FDP program, sir. Thank you. Now I request our secretary, sir, Shri S.P. Singh, sir, GGES Educational Society, to say something, sir, on this FDP closing ceremony. Okay. Good afternoon to one and all. Hon'ble Vice Chancellor Dr. Vijay Pandey ji, President GGES Shri Surendra Singh ji, respected Doctors A.K. Chaudhary ji, Registrar Jharkhand University of Technology,
Dr. D.K.Singh ji, Director BIT Sindri, Dr. Saranjeet Singh ji, Pro VC KIITS Kalinga Bhubaneswar, Dr. Neelesh Pandey ji, Assistant Advisor NAAC, Dr. Harpreet Kaur, HoD Fashion Design KMV College Jalandhar, Dr. Priyadarshi Jaruhar, Director GGSESTC, Guru Gobind Singh Educational Society Technical Campus Bokaro, eminent speakers, faculty members, and dear participants. The vision of Guru Gobind Singh Educational Society Technical Campus Bokaro is to provide world-class education, training, and research opportunities in the fields of technology, management, and other disciplines. To achieve this vision, the institute is working with purpose and excellence. GGSESTC is an applicant for NIRF ranking and is aspiring to achieve the highest position in the state of Jharkhand. Recently, auditors have submitted reports for ISO 9001-2015 certification. GGSESTC is steadily and successfully moving towards its expansion goals in academia, research, and administration. The college management strives to provide quality technical education at affordable fees. GGSESTC from JUT is aspirant for highest achievable grade of NAAC under the dynamic leadership of its director, Dr. Priyadarshi Jaruhar. I especially thank Hon'ble Vice Chancellor JUT, Dr. Vijay Pandey ji, and Registrar JUT, Dr. A.K. Chaudhary ji, for providing valuable association to this one-week National Faculty Development Program. And with this, I thanks to one and all. Thank you very much. Yes, thank you so much, sir. Now I request our director, sir, Dr. Priyadarshi Jaruhar, sir, to give insights on today's FDP program and in this valedictory session. Honorable Vice Chancellor of Jharkhand University of Technology, Ranchi, Professor Vijay Pandey, sir, Honorable Shri Surendra Singh, sir, President, Guru Gobind Singh Education Society, Bokaro, both chief patron of this FDP program, Honorable Secretary, Guru Gobind Singh Education Society, Shri S.P. Singh, sir, patron of this 5-day FDP program, Honorable Shri A.K. Chaudhary, sir, Registrar, patron of this program, respected Professor Saranjeet Singh, sir, one of my friends and Pro Vice Chancellor of KIIT Bhubaneswar, a very renowned university, top ranking university of India, famous all over the world, very eminent scientist, he's a professor from mechanical engineering. So, Dr. Neelesh Pandey, sir, Assistant Advisor NAAC Bangalore, Dr. Harpreet Kaur, Madam, Head of Department KMV Jalandhar, and all eminent speakers who have joined in this FDP program and all participants. I thank you all for coming and joining this program. I will not take much of the time. Only in 2 minutes, I will explain the purpose and objective of this 5-day FDP program. As we all know that the NAAC has revised its manual for accreditation and assessment, and after 1st June 2022, it has been enforced. So it was required to understand the
changes, particularly in our affiliated institutions. So in that, I will just speak 2-3 minutes regarding the teacher and quality, teacher profile and quality, which comes under criteria 2. Here, teacher quality is composite term to indicate the quality of teachers in terms of their qualifications, teacher characteristics, adequacy of recruitment process, faculty availability, professional development, and recognition of teaching abilities. So under these points, we have covered it under professional development and of course recognition, because this is a unique FDP program in which we have given chances to our head of departments and some young faculty also to prepare and understand and present the various NAAC criteria so that they can have a very good interaction and knowledge in depth regarding the criteria. So that was the total motto behind this 5-day FDP program. I thank all the participants who have joined from all over India, particularly from Maharashtra, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, and Gujarat. Thank you very much. Thank you, sir. And I thank to all the eminent speakers for providing such a valuable informative session. Now, I am very thankful to all the participants for attending this FDP. It's time to acknowledge the valuable presence of our participants, and I invite them for 10 minutes session of interaction with eminent speakers to share their queries, suggestions, views regarding 1 week NAAC revised ANA Framework 2022 National Level Online FDP. I would like to request our AO ma'am, Pallavi ma'am. Ma'am is in the criteria 3. Ma'am, if you have any questions or queries regarding criteria 3 and for interaction, ma'am. Thank you, How Shweta. is your experience? Yes, ma'am. Thank you, Shweta ma'am. I have joined criteria 3, and our college has been extensively working on research work, research programs, on community engagement, extension programs. And as an administrative officer, I have been actively involved in documentation work for various kinds of extension programs. And we have this, we are aspirants for community radio station, and we are applicants for that. So we are very hopeful, and we hope to go on expanding our engagement with the community under the criteria 3 conditions. And my best wishes to GGSESTC, and I deeply thank all the guests, the eminent speakers, and our honorable patrons to have enabled us to conduct this faculty development program on NAAC revised assessment and accreditation framework 2022. It has been very helpful to us. The members who have been actively engaged in the NAAC work for the college, it was very insightful. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am. Now I request Professor Divakar sir. Yes, Divakar sir. NAAC criteria 1, NAAC criteria 1, Divakar sir. Yes, sir. मैं क्राइटेरिया 1 का से हम 2 आदमी हेड है, सुमित कुमार पांडे और मैं। मेरी तरफ से जो जहाँ तक
बात है क्राइटेरिया का, तो बहुत अच्छा ही क्राइटेरिया का आपको आगे बढ़ रहा है। और नैक का जहाँ तक हम लोग का तैयारी है वो एज लाइक बहुत अच्छा प्रोग्रेस में चल रहे हैं। 1 to 7 तक हमारा जो है प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी जो FDP के थ्रू जो प्रेजेंटेशन दिया गया है उससे हम लोग को बहुत ऐसा चीज है जो कंफ्यूजन था जो वो क्रिएट हुआ था वो सारी के सारे हमारे दूर हो चुके हैं। और शायद हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था इस इंस्टेंट पे जब हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और उसको ब्रीफली हमको डिस्कस कर दिया जाए तो हम और ही ज्यादा उससे ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उसके लिए हम और ही ज्यादा तैयार रहते हैं। आगे जो आएगा वो पीछे में उसके लिए तैयार है और क्या बेहतर है। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to call Dr. Deepak Kumar to kindly share his views on this 5 days FDP. Deepak, sir. So, NAAC is very important for our college, and it is also related to the academic progress and academic growth of the college as well as for the student and faculty. So we should go ahead for this NAAC accreditation. Hello. Yes, sir. Am I audible, ma'am? Continue, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So NAAC is a very good accreditation which an organization should get, and we should move ahead for this accreditation, and we should be prepared for all the challenges and requirement for this NAAC accreditation. Thank you. Yes, thank you, sir. Now I request Professor Smita Kishore from Cse Department to share her view. Yes, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes, you are audible now. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, regarding this FDP, I would like to say that this session was very interactive and we have got a lot of information so that we can proceed further accordingly. And as we have got the guidance from our directors also, so it was very helpful for us, and we hope that we will achieve our goal. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes, there is one participant, Dr. Kamlesh Chaurasia, sir. Yes, sir, kindly share your views. So I request all the members, please put on their camera on for photo session. I request every participant, please put on your camera on. Meanwhile, I request Dr. A.P. Barnawal, sir. Sir, kindly you share your views regarding this FDP. Good afternoon. Yes, sir. To all. Indeed, this FDP is a highly important program. I have listened a lot from eminent speakers, which is useful to us. We are motivated in short span of time. We will cover for the best. Thank you.
Thank you, sir. Once again, we request Dr. Kamlesh Kumar, sir, to kindly share your views. So thank you so much, each and everyone, our eminent speakers, our guests, and our participants. I'm sure that this FDP was informative and all our participants have benefited by attempting it. Once again, I thank all of you. Now, I would like to call Professor Apurva Sinha, Coordinator BBA and BCA, to present vote of thanks. Thank you, Shweta ma'am. I, Apurva Sinha, from Assistant Professor Cse Department and BBA BCA Coordinator. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the valedictory session of 1 week national level online FDP on NAAC revised A&A Framework 2022 in association with JUT. I would like to thank our Chief Patron, Shri Surendra Singh sir, Honorable President GGES Bokaro, Chief Patron Professor Dr. Vijay Pandey sir, Honorable Vice Chancellor JUT Ranchi, Patron Dr. A.K. Chaudhary sir, Honorable Registrar JUT Ranchi, Patron Shri S.P. Singh sir, Hon'ble Secretary GGES Bokaro, Principal Convener Professor Dr. Priyadarshi Jaruhar sir, Director GGSESTC. I would also like to thank eminent speaker of valedictory session, Chief Guest Professor D.K.Singh sir, Director BIT Sindri, Dr. Neelesh Pandey sir, Assistant Advisor NAAC, Bangalore, Guest of Honor Professor Dr. Saranjeet Singh sir, Honorable Pro Vice Chancellor KIIT University Bhubaneswar, who honored this function with their inspirational thoughts. I extend my gratitude to Professor Dr. Harpreet Kaur, HoD FD KVM Jalandhar. I heartily thank to all the speakers of valedictory session, Dr. Priyadarshi Jaruhar sir, Director GGSESTC, for introduction of NAAC revised manual and as a keynote speaker of Criteria 6. Professor Shweta Kumari, IQAC Coordinator for role of IQAC. Professor Dayasankar Divakar sir and team member Professor Sumit Pandey sir for Criteria 1. Professor Pankaj Kumar Rai for Criteria 2. And Professor Prabhakar Kumar and team member Professor Pallavi Prasad ma'am for Criteria 3. Dr. Professor Rajendra Prasad Kumar for Criteria 4. Professor Dr. A.P. Barnwal sir and Rohi Prasad sir for Criteria 5. Dr. Bhaskar Nand sir and team member Nishan Kumar sir for Criteria 6. Professor Gautam Kumar sir and team member Salim sir for Criteria 7. Dr. Vikas Bhosal sir, NEP Coordinator for NEP 2020. I heartily thank to our team member, Professor Pallavi Prasad ma'am, Administrative Officer, for her support and guidance, Professor Shweta ma'am and Anupriya ma'am for hosting today's session, Professor Tej Bahadur, Professor Nishant Kumar, Professor Mahmood Alam, Mr. Anil Kumar Singh for giving their selfless effort to make the FDP successful. And last but not the least, I would like to thank all the participants for making the program successful. Once again, I thank one and all present here. Thank you. I hope we all will be meeting shortly
for 2 days seminar on human values and professional ethics in technical education on 16th, 17th of June 2020. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to seek permission from our Honorable Secretary, sir, to end this valedictory session. I request our director, sir, to kindly permit us to end this valedictory session. Yes, thank you all, and congratulations to all participants and eminent scientists and academicians and our management and invited guests. Thank you very much. I allow for the closure of this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all of you, once again.